हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू हैव कम टू द राइट प्लेस। आप सही जगह पे आए हो। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर मार्केट में ओपन हुई है, उसकी एनालिसिस करके आपको अगर उसमें इन्वेस्ट करना है तो आप उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे ले, उसके बारे में हम आज एनालाइज करेंगे और उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये एपिसोड है वो आपको हेल्प करेगा कि वेदर दी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एनसीडी इज राइट फॉर यू। अगर वो राइट है तो विच ऑप्शन ऑफ द बॉन्ड्स ऑन ऑफर यू शुड सिलेक्ट, आपको कैसे उसको सिलेक्ट करना चाहिए, उसके बारे में आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परीख, father of two lovely kids, loving woman. I'm an edupreneur, now turning to a well coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during your life. तो एक बार फिर से फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एनसीडी आपके लिए क्या ऑफर लेके आ रही है। फाइनेंस कॉर्पोरेशन की रिटेल बॉन्ड ऑफर इज इंटेंडेड टू रेज मनी फॉर लैंडिंग, repaying some debts and other corporate purposes. The current bond offer, which opened on January 15, will be closing on January 29, 2021, is the first tranche of these issues planned for 2021, and it hopes to raise rupees 5,000 crores. The details are as follows. It is open to resident individual and HUFs. The bonds carry a face value of rupees 1,000 each, with a minimum application amount of rupees 10,000. Allotment will be on a first come first serve basis. These bonds will be issued in demat accounts, so it will be listed on BSE for trading purposes. They are backed by security of the first charge on Power Finance Corporation's receivables and rated AAA by CRISIL, CARE and ICRA. So they are highly rated bonds. AAA rating is that. There is no put or call option which could result in premature closure, means you cannot exit during your investment journey. The interest receipts are taxable, so it's not tax free, and there are only interest payout options available. मतलब आपको मैच्योरिटी तक इसमें इन्वेस्ट रहना पड़ेगा और आपको बीच में आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट को कैसे लेना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, उसके ऑप्शंस आपको दिए गए थे। तो द इश्यू ऑफर्स यू द चॉइस ऑफ 7 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। चलिए देखते हैं कि वो 7 टाइप्स क्या है। Right. While the tenure ranges from 3 years to 15 years, the rates range from 4.8% to 7.15%. Series 5 Alon, which is floating rate bond, promises 80 basis point spread increase over the prevailing yield on the 10-year GSEC. The spread will be calculated on a 15-day average of the daily yield disclosed by the FIMMDA prior to each interest payout date. If you fail to indicate your choice, PFC will allot you 10-year fixed rate bond carrying 7% per annum interest as the default option. तो जो ऑप्शन है इसके ऊपर नजर डालते हैं। देयर इज सीरीज 1 जो फिक्स रेट वाली इंटरेस्ट दे रही है और उसकी कूपन रेट है 4.8%, मतलब वो 4.8% आपको रिटर्न देने वाली है। और उसकी फ्रीक्वेंसी एनुअल, मतलब साल में एक बार वो आपको इंटरेस्ट देने वाली है अगर आपने इस बॉन्ड को खरीदा है तो। और उसकी मैक्सिमम टर्म इज 3 इयर्स। सीरीज 2 फिक्स रेट है अगेन वो भी, बट रिटर्न इज 5.8%, फ्रीक्वेंसी अगेन इज एन एनुअल और इट्स अ 5 ईयर। Series 3, it's a fixed rate. Coupon rate is 6.82%. Frequency of interest is quarterly and it's a 10-year bond. Series 4, fixed rate, 7% coupon rate. Annual interest payment option. Term is 10 years. Series 5, it's a floating rate. Coupon rate 80 bips over 10-year gilt. मतलब at any given point in time, what will be the 10 years gilt rate is there? It will give you 80% basis points more than the 10-year prevailing gilt rate. Frequency of interest will be annual, and the term of bond will be 10 years. Series 6, fixed rate. The return would be 6.97%. The interest would be payable quarterly, and the term of tenure of the bond would be 15 years. And Series 7, fixed rate, 7.15% interest rate will be payable and it will be paid annually.
and it's a 15 years bond. Now let's analyze which one is right. तो पहले समझ लेते हैं उसकी बिजनेस मॉडल को, ताकि हमें बॉन्ड की रिस्क और बॉन्ड से रिटर्न के बारे में पता चल जाए. So evaluated purely as a non-bank lender, PFC's business carries more negative than positive, right? As we know, power situation India में क्या है? As the government of India's nodal agency for funding power sector infrastructure, PFC finances generation, transmission, and distribution projects. Apart from central and state power utilities, this makes for concentrated loan book with government utilities making up to 86% of loan book, and private sector power produces the rest. So 14% is for private and 86 is for government. Government power utilities tend to be haunted by losses and delayed payments. As state electricity tariffs don't match generation and distribution costs because there is a political component. COVID disruptions have aggravated these problems and prompting the center to come up with a bailout package. Private sector power producers have built up high debt levels thanks to unremunerative tariffs, high fuel costs, and lack of assured offtake. They are the main contributor to non-performing assets of Power Finance Corporation's books. Going forward, a speedy resolution of private sector power NPS through the IBC route and the ability of the recent discount package to elevate the liquidity woes in the state utilities hold the key to PFC's performance going forward. Right. PFC's acquisition of majority stake in Rural Electrification Corporation in March 2019 at the government's behest has expanded its size but not helped its financial situation. Prior to the acquisition, PFC had a 2.78 lakh crore loan book with a capital to risk asset ratio CRAR of 17.1%, Tier 1 capital ratio of 14%, and gross NPAs of 9.6 and net NPA of 4.8% as of March 2018. By March 2020, PFC's consolidated loan, including RECs, were rupees 6.67 lakh crores and CRAR was 16.1%, only slightly higher than the statutory 15%. Gross NPAs, though high, showed some improvements by March 2020 at 7.4% and net NPAs at 3.6%. In the 6 months ended September 2020, PFC reported a standalone net profit of rupees 3,784 crores on total revenues of rupees 17,988 crores. The risk associated with PFC's exposure to the troubled power sector is, however, mitigated by its ability to raise prodigious funds at low cost, thanks to it being 55.9% Government of India owned institution. PFC has been able to regularly tap a variety of sources for funds even amid the pandemic, ECBs, market borrowings, and recently 54 EC bonds. Investors in PFC bonds therefore can take comfort from its sovereign backing and consider it as a safe investment. They must, however, watch out for only one risk: the government paring its stake below 51% through divestments or fresh equity raising by PFC trimming the government stake, as this would materially restrict PFC's access to low cost. So these you must keep in mind while investing into PFC bonds. Which one should you select? So if you want up to 5 years of option, I would recommend you looking at the interest rate available with the post office time deposit, POMIS, and the NSEs. You should avoid PFC bond. If you have the money to be parked in a that kind of investment category for 10 years, PFC's floating rate bond is superior to the fixed rate one, as it may help you benefit from the rate increase and ward off capital losses. तो अगर 10 साल के लिए अगर आपके पास डेट फंड में पैसे डालने के लिए है, तो आई वुड रेकमेंड यू टू गो फॉर पीएफसी फ्लोटिंग रेट, क्योंकि वो बाकी के फिक्स रिटर्न ऑप्शन से अच्छे इंटरेस्ट देने वाली है, क्योंकि ये 80 बिप्स की फ्लोटिंग लेके आ रही है, और वो आपको आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ने की गुंजाइश जो है उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और वो आपको कैपिटल लॉस से बचाएगा. But the 15-year bond offers visibility for long term and scores over annuities, but can entail opportunity loss, क्योंकि 15 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, राइट. So this is how you need to select based on your needs. अगर आपके पास 5 साल के लिए पैसे हैं, then I would not suggest you to invest into PFC bond. Go for post office investment vehicles. अगर आपके पास 10 साल के है इन्वेस्टमेंट होराइजन है, then PFC would score better over other debt funds.
और 15 साल में रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट आप अगर हो सकता है कि यू माइट लूज सम बेटर अपॉर्चुनिटीज जो आपके लिए लेके आ रही है, बिकॉज देर इज नो पुट और कॉल ऑप्शन एज आई मेंशन इन दिस वीडियो अर्लियर। आपको एग्जिट रूट नहीं है, यू हैव ओनली ऑप्शन टू कीप ऑन अर्निंग द इंटरेस्ट। तो वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस की 15 साल में गुंजाइश हो सकती है। सो बेस्ड ऑन योर नीड यू शुड सिलेक्ट विच बॉन्ड यू शुड इन्वेस्ट। इफ यू विश टू कीप ग्रोइंग और कीपिंग योर मनी ग्रोइंग, तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं www.planetwealth.in पे। वहां पे कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए। फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए एक अच्छी साइट में रेकमेंड करता हूँ इन्वेस्टर कम्युनिटी को, वो है moneycraft.com। आप मेरे फेसबुक पेज प्लेनेट वेल्थ को भी लाइक कर सकते हैं। आप फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेलबींग में भी ज्वाइन हो सकते हैं मुझसे। और सबसे इन सभी चैनल से जुड़ने के लिए और सबसे आसान तरीका ये है कि आप मेरी व्हाट्सएप नंबर स्टोर कर लीजिए और मुझे एड मी अपना नाम करके भेज दीजिए। मेरी व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9328190022। आप उसको प्लेनेट वेल्थ से स्टोर कर लीजिए और फिर मुझे एड मी करके अपना नाम लिख के भेज दीजिए। सो आई विल बी एडिंग इनटू माय ब्रॉडकास्ट ग्रुप, but make sure you save my number because broadcast messages you will only receive if you have my number stored in your mobile number. So you save it with the Planet Well name. आई होप ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बॉन्ड की जो एनालिसिस और जो रिकमेंडेशन की वीडियो, ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बना के शेयर कर रहा हूँ, वो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएट करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। मे गॉड शावर अबंडेंट वेल्थ टू यू और मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।